सो मोस्टली जो टूर्स हैं ना वो उसको ज़्यादातर यहाँ बारबी जोन से यहाँ से मिलते हैं। ये होटल है, NH होटल है, यहाँ से मिलते हैं। ये बस रहती है इधर सामने से, ये है सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से आप वॉक करके आ सकते हैं, उधर से भी और इजीली यहीं पे सारे टूर्स यहीं से जाते हैं। ये पिकअप पॉइंट है इनका, क्योंकि मैंने भी जो 2 टूर्स लिए वो भी यहीं से पिकअप था, ठीक है। और मैंने बाकियों का भी चेक किया तो बारबी जोन से ही पिकअप था। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड बारबी जोन NH कलेक्शन होटल। For now, we need to talk about windmills. For we are going to Zaanse Schans. Repeat after me. Zaanse. Schans. Oh, what a wonderful language. They arrived in Amsterdam. It wasn't called Amsterdam yet, of course, because it was all one big swamp, marshland as far as the eye could see. And those early pioneers, they thought, we'll stay here. The reason they thought that was because around the swamps, the more densely swampy bits, in the clearer water, there were lots and lots of fish. And basically they knew if they could control the water and catch and sell those fish, they could make a lot of money. So that's why they stayed. So they began to control the water. At first, imagine we're all standing in a swamp and the water is up to our ankles, maybe up to our calves. What we have to do is control it. So first they dig ditches. They make those ditches strong, they fortify them so the water is flowing in one direction. And then they hit upon the polder system. P-O-L-D-E-R. Polder. That's how they reclaim the land in this country. So imagine we're standing in the swamp. What you have to do is push the land around you as best you can. Maybe you bring in some other stuff from outside to fortify it, but you make a wall around you. That is called a dam. We're now inside the polder. We've got the wall around us, and the polder can be the size of a house, size of a football field, or the size of a small village. The important thing is we've got a wall around us, and then we start to get the water from inside the polder outside over the dam wall that we've created. At first they used their hands and buckets and anything else they had, but within 100 years they brought in the windmills. Windmill technology enabled them to dry out the land. So they built a windmill at the side of the polder, and the first giant sails were attached to a water wheel, which would lift the water from the sides of the dam wall over the dam wall, basically. It's a little more complicated, man. To be honest, I'm still kind of figuring out how they did it after years of talking about it. और आज वेदर बहुत ख़राब है और हम आए हुए हैं ज़ांसे खान। लुक एट दिस। बारिश, खतरनाक बारिश हो रही है, सब लोग अपने छाते वाते में। मैंने अपना ये चोला पहना हुआ है। ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। सुबह जल्दी शुरू हुआ था, ये 6 घंटे का टूर है, काफ़ी सारी जगह जाएंगे। तो स्टार्ट किया है ये ज़ांसे खान, जहाँ पर ये विंडमिल्स हैं, फार्म्स हैं। तो इसका नज़ारा लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो नाजरीन, एक बार फिर से डिस्कवर हैप्पीनेस की प्रेजेंटेशन राइट फ्रॉम एम्स्टरडम। और आज के वीडियो में एक और कंट्री साइड का वीडियो, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कीतौन देखा था। और आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है ज़ांसे खान से। तो आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन, बट विल गेट देयर, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आज के टूर में हम लोग देखेंगे किस तरह से पहले के लोग एम्स्टरडम में लाइफ जिया करते थे और कैसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी, व्हाट आर द लाइवलीहुड्स एंड क्या होता था। तो विल स्ट्रेट गेट टू दैट, ऑलराइट। तो व्हाट इज़ ज़ांसे खान? ज़ांसे खान इज़ कारपेंट्री विलेज, ठीक है, इजी वर्ड में। 1961 में इसकी खोज हुई थी और वहाँ से फिर ये इसका नाम ज़ांसे खान्स पड़ा। और ये एक टूरिस्टिक स्पॉट है। तो यहाँ पर आप ये विंडमिल देख रहे हैं, चीज़ फैक्ट्रीज़ हैं और लोग यहाँ पर अभी भी वैसे ही रहते हैं। और ये एक स्पॉट है, यहाँ से टूर की स्टार्ट हुई थी और अब यहाँ से हम लोग दूसरी जगहों पे जाएंगे। सॉरी, कैमरा कहीं कहीं पर फ्लिक हो रहा है बिकॉज ऑफ रेन, और साउंड क्वालिटी भी कहीं कहीं पे, जब तक बारिश होगी तब तक वैसा रहेगा, बाकी परफेक्ट रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एन्जॉय। ऐसे उसमें फ़ैन में कपड़ा वपड़ा लगा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है वो पूरा। इस तरह से यहाँ पे डच लोग पहले क्या करते थे। तो हर चीज़ का काम विंडमिल से होता है। I hope you can see me. Alright. जैसा देश वैसा देश। फीलिंग एकदम वैसी आ रही है। कैसी? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं।
वो वाली एकदम फील आ रही है लिटरली, यू नो। आते ही मतलब जबकि मैंने विंड शीटर पहना हुआ फिर भी एकदम पानी से भीग गए। ये ड्रिजलिंग रहती है एम्स्टर्डम में ज़्यादातर। तो मैंने यहाँ से पॉन्चो ख़रीदा है 6 यूरो का। काम आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा आगे चल के, बिकॉज मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती। बट स्टिल या इट्स अ सोवेनियर says Amsterdam. Ja, dus jullie zijn You're all from Portugal? ik doe in Spaans. Oh, from Brazil. Beautiful country. Nee, ik was Been a couple of times. Very nice country. Welcome to Edam. So welcome to our next stop. इसका नाम है ईडैम। और ईडैम के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बता दूं तो वो ये है कि 300 साल से ये एक फ़िशिंग विलेज है। और फ़िशिंग विलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस बात की आती हैं? फ्लड की। तो अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ्लड को कंट्रोल कर पाते। अच्छा, एक कमाल की बात कि किंग ऑफ स्पेन किंग चार्ल्स द सेकंड 1500 में वहाँ पर इनका दौरा हुआ और वहाँ पर इन्होंने वहाँ के लोगों के लिए फ्लड से बचने के लिए डैम्स बनाए और वहाँ पे कॉलोनीज़ बसाई। और वो एक कॉलोनिस्ट थे और किंग ऑफ स्पेन का कब्ज़ा था ई डैम पे। ऑलराइट, तो उन्होंने कॉलोनीज़ बसाई और वहाँ पर लोगों को, फिर लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ और भी हम लोग करते हैं क्योंकि फ़िशिंग से सबका भला नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स का काम शुरू करा और वहाँ से फिर वो चीज़ बनना स्टार्ट हुई। और फिर हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि चीज़ का व्यापार कितना बड़ा हो चुका है साम्राज्य कितना बड़ा फैल चुका है। और ई डैम की चीज़ काफ़ी मशहूर है। ई डैम की चीज़ सपोज़ जो ई डैम इटसेल्फ में अवेलेबल थी वो थी अराउंड 600 रुपये की, 600 इंडियन रुपीज़ या कह लीजिए 3 दिनार की। और इन बहरीन इट इज़ जस्ट डबल ऑफ दिस कॉस्ट। तो ये है ई डैम। अच्छा, जब से मैं आया हूँ ना तब से बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी आज हो रही है। तो पिछले टूर्स में बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट वो लंदन में जब वहाँ पे थे हम लोग ईथॉन में तो वहाँ पर थोड़ी बारिश हुई थी, बट वो भी एंड में हुई थी और थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई थी। बट यहाँ पर पूरा टाइम बारिश चल रही है। आई होप आई डोंट गेट सिक। दिस ब्यूटीफुल टाउन। यहाँ पर लोग रहते हैं अभी भी। इस जगह का नाम है ई डैम और ये एक टूरिस्टिक स्पॉट है। Look at this beautiful bridge. ये फूल मुझे हर जगह दिखे। तो दोस्तों ये एक और स्पॉट है ई डैम का, बहुत ही फेमस है। इसका नाम है ग्रूट कर्क। तो ये एक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है। और ये इसका फ्लोर अगर आप ये देखेंगे तो ये क्योंकि फ्लड के इशू रहता है ना, इस वजह से इन्होंने इसको ग्रेवल ये सब डाल रखी हैं, सीशल्स वगैरह। बारिश कंटिन्यूस चल रही है वैसे ही और हम लोग ई डैम की गलियों में चक्कर काटते हुए। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है जो कि लीनिंग म्यूज़ियम है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि सब तरफ पानी पानी है, तो ये बड़ी मुश्किल से ये म्यूज़ियम बना है और ये थोड़ा सा टिल्टेड है। और ये है ई डैम की असलियत। मतलब ये एक स्वाम्प पे बना हुआ है, मतलब पूरा एम्स्टर्डम ऐसा ही था। अभी ये जगह पे क्लोजेस्ट टू दैट यू कैन सी एंड इमेजिन कि पहले किस तरह से हुआ करता था, तो ये इस तरह से था। Marco Polo. I'd like to explain to you how we make our Dutch cheese. And although the Netherlands is just a very small country in the world, we are the 4th largest cheese production country, producing 900 million kilograms of cheese in 1 year. And about 85% of all these cheeses are made
in large cheese factories. Only 15% is made in equal farms like we have it here. And here we produce the cheese in the same way as they did it 100 years ago. And the secret from these cheeses goes from father to son. But today you are lucky, because today we will reveal you that secret. But I actually think you already know what the biggest secret is behind making cheese. As you can see, also very good for bowling. And for the ladies, very good for your husbands. तो ई डैम से क्विकली फिनिश करके अब हम आ गए हैं वोलैंड डैम. इट्स कॉल्ड वोलैंड डैम. ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस. सो दिस इज़ फेमस फॉर इट्स चीज़ एंड द डच शूज़. सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी आपने सुन लिया कि किस तरह से चीज़ किस मुकाम पे पहुँच चुकी है, और इसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा छोटा सा डेमो अबाउट डच शूज़. वो किस तरह से पहले बनाए जाते थे, कैसी मशीनरी यूज़ होती थी. आई होप यू लाइक इट. एंजॉय. And as well safe, you know? Yeah? So, but no machines yet. So must do by hand, right? Careful ladies, I'm gonna, oh, no, that's alright, stay with us, that's alright. Look, scrape off the outside, you see, the outside, or the inside with this spoon, you see? Yeah, a lot of work. One day a craftsman could make 2 pair of shoe only, 2 pair. When the machine came many centuries later, in one day 200 pair. Wow. Now, looky, I take a piece of poplar wood. It is wet. Why? It works better. You see, it's wet. Have a look what it looks like now. Yeah, here we go. Yeah. And I'm going to put it in the machine. And we're going to make a new shoe. Some of you can see the model here. And, oh, okay. Now, I must inform Chloe and Grandma and you, can little things go fly to you? No danger, okay? You will survive and marry. No, sorry. We're not going to go there. We first have to talk to Grandma after. Well, not going to go there anyway. Stop it. Sorry. Okay, now, if it's loud, everybody, you can please put the fingers in your ear, okay? Yeah? All right. There you go. All right? And for now, we're going to make the hole. We do that on this machine. Okay, still a bit more noise. Here we go. Chloe, where are you from? What country? California. All the leaves are brown and the sky is gray. Do you know that song? No. The mamas and the papas. That's no, it's not almost. Come on, she's a different generation. All right. And that was when music was music, right? In the open air 3-4 weeks, not in the sun, and then you can sand, polish, paint and varnish. Okay? I'll have some special shoes, but before I talk about them, I think it's about time I give Chloe a little present. Can I have one? This is for you, because I was not so nice to you, maybe. Okay, so we can write your name here. Would you like that? Yeah. There you go. Thank you. These are wooden shoes. Oh, yeah. ये लकड़ी के बने हुए हैं. This is handmade art. 30. That's the size. 50 यूरो में आपको ये शूज़ मिल जाएंगे. तो अगर आप भी यहाँ से वुडन शूज़ ले जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सोवेनियर के लिए, उसके ऊपर आप छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के जैसा भी आपका दिल करे, तो वो डिफरेंट प्राइस रेंज के हैं. तो व्हाट आई हैव सीन वाज अराउंड 50 यूरो, और उसके ऊपर आप अपना नेम इम्प्रिंट करा सकते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ टेस्टिंग करी है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. सो यू कैन ट्राई एज मच चीज़, यू कैन ईट एज मच चीज़ यू लाइक. सो दिस इज़ द स्मोक चीज़ दैट आई एम हैविंग.
और इसी तरह से बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी और आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज. नोबडी विल आस्क यू अ पेनी. You can try all the cheese, all the things what we have here. शूज़ पे अगर आप शूज़ ले रहे हैं तो आपको अपना नाम एनग्रेव करा सकते हैं, टाइम एंड डेट फॉर फ्री. ये आधा किलो 9 यूरो. That's tasty. This is a very quiet cheese tasting. I'd like to destroy that calm and quiet by talking rubbish, which is what I'm doing now. Nothing to say, but I'm still talking. It's weird, isn't it? You will replace Jimmy Carr soon. Oh my god. Oh my god, I wish. Yes, sir. Get the book in there. Hello. He's our best tour guide. The best in the world. My name is Carl Webster. Look, there it is there. So that's it, दोस्तों. I hope कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा. Zaanse Schans, Edam, and finally we've seen the cheese factory and the wooden shoe demo. तो आगे के वीडियो में हम लोग और भी जगहें जाएंगे. तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ. इसका पार्ट 2 जल्दी रिलीज़ करूँगा. तो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर मार करके इसको ऊपर बढ़ा दीजिए. ऑल राइट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट. तो चाओ. अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें. शब खैर, अलविदा.